न जाने कितनी कहानियों को हमने एक साथ देखा है, जाना है, और न जाने कितने पल हमने एक साथ बिताए हैं, बट किसी कहानी का आरंभ इस तरीके से होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। और कहानी का आरंभ ऐसा है तो इसका इति अंत कैसा होगा ये तो इसका अंदाजा लगाना भी गलत होगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों एंड माडिया, दमदार किंग्स में स्वागत है आपका एक और नई कहानी एलन वेक 2 के पहले एपिसोड में। आरंभ करते हैं। Where'd he gone? एक बात कहना चाहूंगा, पहला अगर एपिसोड है तो सबके लिए नहीं है कहानी, ये सबके बस की बात नहीं है इसको देखना, समझना और जानना। सो एक बार पहला एपिसोड देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप इसे आगे वॉच करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि कई सारे पहलू होंगे जिस अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके एंगल से हम इस कहानी को देखेंगे, समझेंगे। एक डिटेक्टिव की नजर से जिस तरह वो पहेली को सुलझाएगा, उन रहस्यों को सॉल्व करेगा, हम वो भी देखेंगे। जहां पे माहौल भयानक होगा, डर का माहौल होगा, हम वो भी देखेंगे। यानी ये कहानी अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग किरदार की नजरों से आगे आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। सो एक बार देखिए, समझिए, फिर आगे आप डिसाइड करिए कि आप इस कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff.
Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. अभी तक जो कहानी हमने देखा था वो विक्टिम की नजर से था, जहां पे आपने नोटिस किया वो एड और It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. जहां पे वो स्टार्टिंग में एक था नहीं, एक लड़का और एक लड़की एड जो जहां ऊंचाई से देख रहे थे, Here we are. जब उसका मर्डर हुआ था तो उसके बाद Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. इनविटेशन रिटर्न 1, जहां जब उसका मर्डर होता है तो ऐसा लगता है कुछ कट वाले उसका मर्डर करते हैं, बट दो लोग देख लेते हैं Memorizing. और उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम आए हुए हैं. मैप एरिया मैप. I think I hear someone. ये रहा मैप. Witch hut, general store, boilet path, rental cabin. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. अभी वो क्राइम सीन तक नहीं पहुंचे जहां पे वो हुआ है हादसा. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? I could easily be thinking. Anyway, उसके बारे में पूछता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, उसके बारे में थोड़ी जानकारी. मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत मौके मिलने वाले हैं आपसे बात करने के. सो मेरी आवाज़ को झेलने के लिए तैयार हो जाइए. आई एम रियली सॉरी, बट बहुत बोलना पड़ेगा यहाँ पे. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. कोई ऐसा जिसने क्राइम को होते हुए देखा हो. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. फिर बॉडी देखते हैं चल के. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off.
The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Okay, let's go. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. What? You can access the case board inside the mind place. Nice one. Let's see. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. All right then. The facts are on the board. जस्ट लाइक एक डिटेक्टिव का ऑफिस होता है और जिस तरह से हम क्लूज फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरा वहाँ पे आप ये फील करने वाले हो. बहुत मजा आएगा. मुझे तो आने वाला है. तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में सबके लिए नहीं है, बट जिन लोगों को देख रहा है आप बहुत एंजॉय करने वाले हो. सो लेट्स वॉच. क्योंकि बॉयज ये सिर्फ यही नहीं होगा, ये मिक्स है. आई मीन नॉट ओनली दिस इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग, बल्कि जब हॉरर वाले एंगल से जाएंगे तो वो तो आपने अगर मेरी पिछली सीरीज देखी एलन वेक की तो आपको पता है कि किस तरह से फाइट करते हैं एनिमीज से और कितना माहौल बनता है हॉरर वाला, और यहाँ पे जिस तरह से ग्राफिक्स एंड चीज़ें हैं वो और इनहैंस होकर आएगा. सो फिलहाल वो अभी बात का है, अभी जो सामने है उसको सॉल्व करता है. लेट्स गो, लेट्स डू इट. Everything we know about the previous murders. अभी तक जितना Worth हमने taking another look. जाना है ये पहले ऐसी बॉडी नहीं जो मिली है, ऐसे पहले भी हो चुके हैं जहाँ पे लोग इस तरह से मर्डर किए गए हैं, उनकी बॉडी को काट के उनकी बॉडी से कोई एक पार्ट बाहर निकाला गया है. जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे ये फोटोज लगे हुए हैं और ये विक्टिम्स के साथ शायद उनकी फोटोज ऊपर लगी हुई हैं. सो यू कैन यूज दिस टू मूव अराउंड, यू कैन दिस टू जूम, ओके, कर्सर फॉर दिस. यू आर नाउ फ्री टू नेविगेट द केस बोर्ड और लीव प्रेसिंग. ठीक है, चलो. मर्डर मेथड. किलर प्रोफाइल. Post-mortem tattooing of the body. जिन लोगों का मर्डर किया उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था. जिस तरह से किसी जानवर को काटा गया था वो टेक्निक यूज किया गया उनको मारने में, और मारने के बाद उनकी बॉडी पे टैटू किया गया है. सभी बॉडी को देख लगता है कि फूल गई हैं वो. छाती पे बहुत ही गहरा घाव है, कलाई और पैरों पे घाव के निशान मिले हैं, और ये है वो विक्टिम्स. ओके. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. ओह, We're मैं just कभी भी getting माइंड प्लेस started. पे जा सकता हूँ लेकिन वो Let's गेम head down the पॉज hill नहीं to the करेगा. crime सो scene. मुझे ध्यान रखना होगा इस चीज़ के बारे में. मुझे बहुत सही लगा, कई बार आपने चीज़ मैंने मुंह सुना होगा बट दोबारा फिर सुनना पड़ेगा. ये चीज़ जब आप स्क्रीन पे होते हो और कोई भी आपको हर्ड या कंपास कुछ नहीं मिलता आपको नेविगेट करने के लिए, दैट्स द बेस्ट थिंग. मैं जो उम्मीद करता हूँ किसी बहुत क्लीन लगता है मुझे वो Hey, चीज़. Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. डाउन द हिल, देन द कैबिन, देन द लेक. उसके बाद पहुंचेंगे मर्डर सीन पे. और मुझे थोड़ा सा अगर मुझे इस वीडियो को बचाना है यूट्यूब की नज़र से तो मुझे वो I'm not न्यूडिटी that जो था old. उसे हटाना पड़ेगा मेरे मेनू में जाके. मुझे ध्यान नहीं था कि इस गेम में ये चीज़ें भी होंगी. सो वो थोड़ा दिक्कत करेंगे आगे बिकॉज ऑफ द नेकेड बॉडी. वेट मिरर पीक. माइटी मॉडेड इज नो दैट मिरर पीक. ठीक है, चलता है. पूरी फील आएगी डिटेक्टिव वाली जब हम सॉल्व करेंगे उस मर्डर को, जिस तरह से वहां पे एक बार पहुंच जाए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं ना कि बॉडी किस तरह से दिख रही है, क्या है. Too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. और जो दो लोग थे जिन्होंने मर्डर होते हुए देखा था उनको टाउन में वापस भेज दिया गया है.
ये पुलिस वाला ही लेके वहाँ पे गया हुआ है। Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. आई थिंक मुझे मेन मेनू में जाके चेंज करना चाहिए अगर मैं बॉडी देखने वाला हूँ तो। लेट्स सी बॉस, देखते हैं पहले उसके बाद, क्योंकि जब बॉडी इन्वेस्टिगेट की जाती है तो उसमें कुछ भी कोई अलग से उसको ढका हुआ नहीं होता, सो मुझे वही बॉडी मिलेगी जो ओके 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 ओके। आई थिंक ये बॉडी बिल्कुल नेकेड है, सो यप आई एम सॉरी बट आपको मुझे पॉज लेना होगा फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स जस्ट टू कवर द, लेट मी चेक कि सच में बॉडी पूरी तरह से क्या, ऑलराइट या ये बॉडी पूरी तरह से, ऑलराइट हियर इज द बॉडी विथ, थैंक गॉड। ओके, जैसा हमने केस पढ़ा और जाना था, जस्ट लाइक दैट बॉडी ब्लोट कर गई है, इसको यहाँ पे लाया गया है, इसको बांधा गया है और इसे सीने को चीर के इसका दिल बाहर निकाल दिया गया है। Procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? देख के तो लगता है, बिकॉज सेम वहां भी वैसा ही, ऐसी कलाई तो नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. फर्स्ट की इमेज allows her to see to close the key, clue the key image can be selected with this and place the keyboard. Okay, okay, ये है। Another body turns up just as we arrive in town. अब जिस तरह से हम क्लू फाइंड करते जाएंगे वहां पे ऐड होती जाएगी और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग मैन, कंसिस्टेंट विद प्रीवियस मर्डर्स। ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि क्या सच में ये उनसे जुड़ा हुआ है या नहीं। ओके, फिलहाल मेरे पास कुछ और नहीं, ऑब्जेक्टिव ठीक है, इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन, ठीक है, और निकालते हैं अभी फोटोज या बाकी चीजें, फिर देखते हैं उनको ऐड करके। मर्डर वेपन नहीं दिख रहा कहीं यहाँ पे, इसे इसको मारा गया है, बट हाँ जस्ट लुक एट द सेम, यू कैन कलेक्ट क्लूज फ्रॉम द बॉडी टू प्रोग्रेस। The killer left the heart right next to the body. ये पहला है, Bruising on the wrist from the cargo straps. एग्जैक्टली holding it जस्ट down. लाइक द प्रीवियस मर्डर, उसके कलाई पे है चोट के निशान और ये Incise stab wound. Just Chest cut cut open. open. Heart removed. और जिस तरह से मारा गया है वो देख के लग रहा है जिस तरह से जानवर को बुचर किया जाता है वही तरीका यूज किया गया है। आइए, न्यू डिस्कवर्ड क्लूज कैन बी प्लेस्ड ऑन द ओपन क्वेश्चन। ओके, Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. ये चौथा मर्डर है जो इस तरह के तरीके से हुआ है। और जहाँ ये बात हो रही है कि इस बार छोड़ के गए हैं, वो जो उन्होंने चेस्ट से निकाला था हार्ट को बाहर छोड़ दिया उन्होंने, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो जिन 2 लोगों ने देख लिया था उनके आने के डर के से भाग गए हैं, वो ये भी हो सकता है। अब हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक ये तो मैं मर्डर सीन से मालूम चला है इन चीज़ों के बारे में, अब किलर और विक्टिम, बट एक चीज़ और है जो है मेंशन नहीं किया जा रहा है, वो है मर्डर वेपन, वो कहाँ है? खैर वो भी मालूम चलेगा। तो क्लूज वर इज हाउ टू ओपन क्वेश्चन अनलॉक्ड डायरेक्शन, सॉरी डिडक्शन, उनको लेके आप डिड्यूस करते हो कि इससे और क्या हुआ होगा या फिर इससे क्या हो सकता है, या इन चीज़ों को लेके उसका निचोड़ क्या है। खैर, सो विक्टिम के बारे में और किलर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेट्स कैन चेक द अपडेट, लर्न मोर अबाउट द किलर, लर्न मोर अबाउट द विक्टिम। गुड 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 गुड, लेट्स गो। Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. यहाँ एक से ज़्यादा Multiple people were here. एग्जैक्टली, बहुत Multiple बढ़िया। killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Heavy blood splatter on the table.
Did they plan for the murder to happen here? बट मुझे और भी इतने से कुछ नहीं होगा और जानकारी चाहिए इसके बारे में। ये नंबर 3 पे अच्छा वो है फुटप्रिंट है शायद। उससे बात करके मालूम चलेगा बिकॉज यहाँ पे और कुछ नहीं है और मुझे जा। Have you identified the Any victim? idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about FBI? 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Clues can be discovered by speaking to people as well as by examining your surrounding. ये FBI से है, 13 साल पहले इस टाउन में आया था। तो क्या तब से गायब हुआ है? उसके बाद इसने बोला कि उसको देखा नहीं गया है और आज दिखा है ये। खैर ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इट्स लाइक अ पार्टी, बट ये पार्टी उनकी होती कल्ट की या फिर Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. अगर ट्राइपॉड हो तो फिर कैमरा भी Was हो। it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Waiting for who? इनके पास तो बताने के लिए कुछ और नहीं है। So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ओके वो जब जॉब उसने छोड़ा है फिर इसको निकाल दिया उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. जॉब से छूटने के बाद वो पागल सा हो गया था डिप्रेशन में, उसने शराब का सहारा लिया और उसके बाद बट एग्जैक्टली उसके बीच में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। मे बी क्लू फाइंड करे और तो मालूम चल सकता है। और वो 2010 से मिसिंग है। Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. अगर इसको सुलझाना है तो फिर I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. टाउन में भी जाना पड़ेगा, बिना वहाँ गए पूरा सुलझेगा नहीं। बिकॉज वो जो दो लोग थे जिन्होंने जो पहला जिन्होंने देखा था इसको होते हुए, उनसे बिना मुलाकात किए तो कुछ आए फाइंड हो नहीं पाएगा। तो मैं टाउन में जाना होगा। बट फिलहाल just Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. कैसा हो गया है वो? बाकी दो चीजें और हैं। बॉटल में भी किलर से रिलेटेड हो। No. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now?
मर्डर का प्लान किया गया था या फिर वो अचानक से यहाँ पहुंच गया उसके बाद Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. क्या बात है, क्या बात Piece है। it together. सब कुछ सारे पीसेस जोड़ के हम एक प्रोफाइल बनाएंगे, मतलब कि क्या हुआ होगा या फिर क्या हमारे एंगल से एग्जैक्ट हम नहीं जा सकते उस नतीजे पे, बस हम एक अनुमान लाए हैं कि हो सकता है कि ये हुआ होगा, तब जाके कोई और क्लू या कुछ और मिलेगा, उसके बाद हम उसके पीछे भागेंगे। फिलहाल लेट मी यूजिंग आवर इंट्यूशंस आई कैन डिस्कवर न्यू क्लूज बाय प्रोफाइलिंग पीपल ऑफ इंटरेस्ट। Agent Nightingale has been MIA for 13 years. 13 सालों से गायब है। How did he end up here? वो यहाँ कैसे पहुंचे? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ये जहाँ हमने अनुमान लगाया ये लेक से होके आया था, राइट? गोल्डन लेक। अगर लेक के पास जाए तो शायद कुछ हमें क्लियर हो जाए। Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Chalo. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. मतलब पूरा It's not that प्लान था ये, complicated. जिस तरह से वो यहाँ पे आए थे और उसके बाद Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is Exactly. unfinished. That seems वो pretty पूरा वेट कर रहे थे यहाँ पे, complicated बियर to वगैरह me. लेके, कैमरा लेके और What ट्राइपॉड was लगा this हुआ guy था इस doing तरह से। skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. पैरों के Lots निशान। of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? हम अगर They हम come out from under the boulder. उसके पैरों में कोई जूता नहीं है, वही इसी के पैरों के निशान होंगे फिर। A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. the These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Yeah. Nightingale came this way. एलन की कहानियों में से तो नहीं है Either जो he उसने dropped लिखा this हुआ है, page, बट
or the killers left it for us. अभी हम वहां नहीं जाएंगे, फिलहाल अच्छी बात ये होगी जो अभी केस I चल should रहा है profile Nightingale about this page. एग्जैक्टली उस पर फोकस किया जाए, तब जाके कुछ क्लियर होगा, अभी नहीं। ये है फुटप्रिंट्स, विक्टिम केम फ्रॉम पे आ जाएगा। I think he came from the lake. But his tracks make no sense. So the killer is watching us. Game on. The We page. found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. हम इस नतीजे पहुंचे कि शायद उसकी बॉडी के अंदर कुछ छुपा हुआ था। Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. बाबा रे। Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? Hey, All the you made above? it back. It's all about Good. control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. कुल मिला के हमें इस बॉडी को मॉर्ग भेजना पड़ेगा जहाँ पे इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद मालूम चल पाया है कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ था तो क्या है, और सच में कुछ छुपा हुआ है भी या बस ये एक हंच है। ये कुछ क्लियर करने के लिए बॉडी को भेजना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी होगी मुझे इनसे नहीं बल्कि उनसे, बिकॉज ये तो हमारे साथ आए हुए हैं। बॉयज अगर इस एपिसोड में 5000 लाइक्स मिलते हैं तो क्यों नहीं इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब आप वॉच करना चाहते हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ये कमेंट नहीं करना कि इतने लाइक हो गए हैं मेरे लिए अपलोड कर दो, बिकॉज एक को लेके नहीं चलना है, सबको लेके चलना है एक साथ। सो इफ आई गेट 5000 लाइक्स ऑन दिस एपिसोड हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इन्वेस्टिगेशन बाकी ये कंप्लीट करेंगे। हॉरर वाला एलिमेंट तो भी आया भी नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल मैं बात करता हूँ, एपिसोड ही बचा हुआ है, भागना नहीं बदतमीज कहीं के। लेट्स गो, लेट्स गेट द बॉडी। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं की हो मेक श्योर कर दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं काम स्टार्ट कर सकूँ। सो आगे बढ़े, लेट्स डू इट। Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Whoa. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Shortcut key. Thanks. Take the car back to Bright Fall. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Which way but? Oh, ये रहा शायद सामने ही है। I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. What? शॉर्टकट की तो है, फिर हम यहाँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बी राइट बैक? हम यहीं जाने वाले हैं। Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. तो अगर आप चाहते हो कि जो FBI एजेंट है उसको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, तो प्लीज़
मेक श्योर कि आप लाइक करो ताकि अगले एपिसोड पे हम काम करें, उसे अपलोड करें. सो I'll be back in a second. Roger. लेट्स गो. आओ. वो बुकर्स वही है, मे बी उनका सरनेम होगा जो यहाँ पे मिले थे, वो विटनेस, उनसे बात करने जा रहे हैं. Altogether yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ये जिस पार्किंग की बात, ये रहा. ओके, आई थॉट कि मैं गलत जा रहा हूँ, बिकॉज मैप ना होना एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है आपको, थोड़ा यहाँ वहाँ. बट ठीक है, अच्छी बात है, डायरेक्ट वहीं पहुँच में आना चाहिए था. Let's drive back to town and meet the ये sheriff हमारी at the गाड़ी ये वाली diner. होगी, नॉट द ब्राइट फॉल्स. असली कहानी तो मुझे लगता है कि टाउन में जाने के बाद शुरू होगी. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. बॉयज, छोटी सी बात कहनी है, कितना भी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड आपके पास क्यों ना हो, आई डोंट नो ऑप्टिमाइज की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, खतरनाक ग्राफिक्स वाले गेम भी 144, 150, 180 FPS पे रन कर रहे हैं. ये 70, 80, 90 पे कैप हो रहा है, और वहाँ भी कभी कभी ये थोड़ा सा भी आपने नोटिस किया वो दे रहा है ग्लिच जैसा. मैं क्या बोलूँ इसको, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ उसे इग्नोर करना. ये आपने अब तक जितना वॉच किया उसमें कहीं कहीं आपको दिखा होगा जितना आप इग्नोर कर सकते हो, बट इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि आपको वॉच करने में कहीं से भी दिक्कत क्रिएट करे, और ना मैं होने दूंगा. आइए. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. नाइस. ऑलराइट बॉयज, वेलकम टू द ब्राइट फॉल्स, जहाँ पे हम इस केस के इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे. नाइस 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 नाइस. इससे पहले उनसे बात करें, मुलाकात करें, जो हमारे दो विटनेस हैं. थोड़ा सा यहाँ पे चाहेंगे तो हम घूम सकते हैं, और जस्ट टू, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भी खूबसूरत इतना लग रहा है दिन में, रात के वक्त यहीं पे जब हॉरर का माहौल होगा तो कैसा होगा. हाय देयर. नाउ द डाइनर. Hey, how's it going? ओह डियर डाइनर, यही है सामने, वही है. Oh dear. ओह डियर. You. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. ओके, मुझे मालूम चला है कि यहाँ पे विटनेस Your है. deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. चलो, अब इनसे मालूम करने के बाद ना बात करेंगे, बहुत चीज़ें हमें नए क्लूज
अनलॉक हो जाएंगे जिससे हम और तह तक पहुंच पाएंगे उस मर्डर के। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो दो बैठे हुए हैं शायद वही हैं। या Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? सो तुम लोग वहाँ पे कर क्या रहे थे कोल्डन लेक पे? ये हमारा पहला सवाल है। What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने देखा क्या था वहाँ पे? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. और तुम्हें क्यों लगता है कि वो कोई कल्ट थे? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. What? The whole thing was terrifying. That's all. वो कुछ बता रहा था, उसने रोक दिया उसको। We found a what? Okay. थोड़ा सा प्रोफाइलिंग करता है इनके बारे में। कोल्डन लेक। The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. बहुत पहले एक फेमस राइटर एलन वेक यहाँ गायब हो गया इस जगह पे, और वो उसके ऊपर रिसर्च करने और वो बुक के लिए क्वेश्चंस ढूंढने, उसका सॉरी जवाब ढूंढने आया था इन क्वेश्चंस के लिए। वाओ। मैंने बोल रहा हूँ ना, वक्त के साथ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और हम जिस तरह से क्लू बाय क्लू फाइंड कर रहे हैं, ये आगे जाके इंटरेस्टिंग होगा। और एनीवे, लेट्स सी द कल्ट ऑफ द ट्री। The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. कुछ मिला है। A necklace belonging to one of the cultists. ये नेकलेस जो उन कल्ट में से किसी का था, और ये उसको अपने पास रखना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है, बट हमें चाहिए वो, अगर हम चाहते हैं कि हमें आगे इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ हेल्प करेगी। बट मेरे पास और कुछ ऐसा नहीं है जो मैं इस केस बोर्ड में ऐड करूँ। हाँ, बट इसे पूछना जरूरी है कि मुझे लगता है कि Tammy found. Exactly. It's evidence. Hi. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Come on. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even Hello there, Rose. missing deer Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She
drowned. What? Your daughter. That's so weird. You don't remember. ये क्या How do you बात know I हुई? have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ये क्या बात हुई? इसका मतलब अब तक जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, हमको लग रहा था कि वो डॉटर हमारी, वो कोई थी नहीं, वो डूब के मर चुकी है और वो मेमोरीज शायद हमने कहीं पे दफन कर दिया है। अकॉर्डिंग टू रोज, नॉट माई वर्ड्स। मैं नहीं जानता सच में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, बट ये तो और All set? oh man, My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. oh wow, what a beautiful Well, series. Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know Yes. about that waitress from the diner? Rose? I would love to explore this town, man. It's just amazing and beautiful. काफी कुछ होगा यहाँ She पे. I kept just saying that my daughter drowned. don't want to She miss knew this. my Please name. don't let me. It was all very I beg you, weird. come on, Rose man. has a talent for saying Story weird बहुत stuff. खूबसूरत होने वाली है. Please let me finish this. I want to, man. Come on. इतनी प्यारी चीज़ है यहाँ पे. Just look at this. What a beautiful. I mean, scene to capture a picture for thumbnail, right? मेरे नीतू के साहब के काम तो आ ही जाएगी ये चीज़. उनको बड़े पसंद आते हैं thumbnail. खैर. Ask about our small business loan. मुझे उस बॉडी के बारे में कंफर्म नहीं है अभी. हाँ, मॉर्ग के बारे में कि मॉर्ग में आई है कि नहीं आई है. Hey, boss. आ चुकी है. Corpse is downstairs ready to go. Yeah, let's go. In the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as Beautiful. possible. Lead the way, Sheriff. Just let me check the map for the Bright Falls. Oh wow. Villa Center. The wood. The manor. Downtown. बहुत बड़ी जगह नहीं है बट फिर भी मजा आएगा खुश. अभी तो वो पार्ट आया ही नहीं है जिसका वेट आप और मैं कर रहे हैं, वो हॉरर वाला पार्ट. बॉस. I'll be Let's right go to the with morgue. you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready It to won't take my open. money. Okay, then. Hey. अच्छा ही रहा. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. कुल मिला के जो एग्जामिनेशन परफॉर्म करता है डॉक्टर या जो भी आप बोलो, कोरोनर बोलते शायद ना, वो नहीं है. तो जो भी एग्जामिनेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे अपने हाथों से. ओके, मे बी आई हैव टू Something about blur more. that part. I They don't know. always cheer me up. आप नहीं जानते I आप can't बहुत say I feel चोचले the हैं same. यूट्यूब के. He's कब क्या किस joking. चीज़ पे वो वीडियो ब्लॉक या फिर वो लगा दे येलो डॉलर, कोई नहीं जानता और बताता तक नहीं है किस चीज़ की वजह से किया है. तानाशाही मैन, तानाशाही. खैर, पानी में रह के मगरमच्छ के मुंह में हाथ कभी नहीं. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo?
Nightingale didn't strike me as a tattoo टैटू guy. गाय, राइट? लेकिन हमने देखा है क्लू वाले बोर्ड पे कि जो पहले पुरानी बॉडीज थी उनके मर्डर के बाद भी ऐसे निशान, जो टैटू जो हमने शब्द दिया था वो मिलता जुलता, जस्ट लाइक दिस वन. खैर, लेट्स गो टू द Defensive wounds. He put up a fight. खुद को छुड़ाने के लिए उसने वो हाथ को खींचा होगा ना. अब यार खुद सोचो, बांध के उसको जब उसके चीर रहे होंगे तो यू नो. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. अच्छा, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ Can't है. make it out. Writing. How'd they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us. That's not right. रिचुअल राइटिंग में ये भी था शायद. हाँ. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. All right. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? जब वो उसके दिल को निकाल के उस पर कुछ राइटिंग कर सकते हैं तो क्यों नहीं. कॉज ऑफ ब्लोटिंग अननोन. क्यों उसे पानी में डुबाया गया पता नहीं. स्किन पर अजीब से टैटू है. नो आइडिया क्या उसका मतलब है. उसके चेस्ट में कुछ इंसर्ट किया गया उसको काटने के बाद. चेस्ट ट्रॉमा क्लियर है कि उसके मरने की रीज़न वही रहा होगा. डिफेंसिव वुंड्स हैं उसके उंगलियों पे और कलाइयों पे. बहुत ज़्यादा ब्लोट हो गया. ऐसा लग रहा है कि बहुत देर तक उसकी बॉडी पानी में थी. अमेजिंग है, अमेजिंग. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Oh boy! Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page.
ट्राई टू स्टे इन द लाइट टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय एनिमीज। और ये हमारी हेल्थ ही बढ़ाएगा। आप अगर एलन वेक के बारे में जानते हो, पिछला एपिसोड आपने पिछले सीरीज अगर आपने देखी है तो, बट जस्ट लेट्स गो। बट ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्थ बढ़ेगा इससे। और लाइट में मुझे देख नहीं सकता, बट ये रहा। He can't see me in the light. क्या होगा अगर मैं डार्क में जाऊं? वो 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 सेफ हेवंस विल रिस्टोर सम ऑफ योर हेल्थ। अगर आप इससे निकलते हुए फिर अटैक किए आते हो कॉम्बैट में, तो ये अनअवेलेबल हो जाएगा। अरे अंदर आओ। My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. वो लाइट खोज रहा है। You can aim by holding L2, press R2 to fire. Vanished. Oh man, it's okay. इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी मैंने, बट figure out where have a article heart, went. Talk to Casey. but he look still around for got clues. up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. ये हमें लगा था कि किसी ने जानबूझ के रखा है हमारा मजाक बनाने के लिए, बट ये वो नहीं है। ये कुछ सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, किस तरह से फाइट होगी, कहाँ मिलेगा, फिर किस तरह से रोकेंगे, हर वो चीज ये पेजेस पास्ट और फ्यूचर बता रहे हैं। A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Maybe ये कल्ट का काम हो सकता है, क्या लगता The है? victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. सही बात, ये हो सकता है कि ये इस तरह से ये करते ही इसलिए हो ताकि मॉन्स्टर्स को बना सके। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये पहला मॉन्स्टर नहीं है जिसे हमारा पाला पड़ा है, मतलब और भी आगे आएंगे। वैसे शेरिफ के साथ क्या हुआ? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Let's go back to the Cauldron Lake. वो जो पेज ने कहा था हमें जाना है वहां पे, ऑब्वियसली उससे सारे धागे वहां जुड़े हुए हैं, तो we have to go back there. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. लेकिन वो जो मॉन्स्टर्स ने हमें बोला कि यार मेक यू पे, मतलब मैं इसका बदला लूंगा, या फिर समझ रहे हो ना, मतलब बदले वाली वो टोन थी। बट हमने क्या किया है? वाह, रिचुअल के बाद उससे कुछ होना चाहिए था उसकी बॉडी का, जो हमने नहीं होने दिया, या फिर समथिंग जो हमने होने से रोक दिया, या फिर पास्ट में कुछ हुआ हो।
We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. I hope बाहर का मौसम अभी भी दिन का ही हो, रात का ना हो गया हो. How could he do anything? Call to Nicholas, नहीं short नहीं what? Oh. Oh thank God, I think बाहर अभी भी उजाला है. जब तक ये उजाले है देख लो अच्छे से. अब नहीं मिलने वाला आगे इतना ज़्यादा. अभी तो ओके. ये टॉर्च हम हटा सकते हैं राइट? आई मीन एक मिनट बॉस. ओके गॉट इट. एक्चुअली मुझे याद नहीं था ना कि किस तरह से हमने होल्ड किया था. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. So boys, इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम वापस जाएंगे उसी लेक पे. एंड नो डाउट आगे जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी कहानी इतना बिल्डअप हो चुकी है, इतने तार आपस जुड़ चुके हैं और बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं. और जिस तरह से वो डर का माहौल अब स्टार्ट हो चुका है तो आपको पता है कहानी आगे कहाँ जा सकती है. प्लीज डोंट लेट मी स्टॉप दिस सीरीज एंड हेल्प मी टू कंप्लीट दिस वन. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस एपिसोड सो दैट हम 5000 तक पहुँच जाएँ और मैं नेक्स्ट एपिसोड पे काम स्टार्ट करूँ. एपिसोड्स ऑब्वियसली 1 से 1.5 घंटे तक होंगे, उससे कम पे नहीं अपलोड करूँगा, जस्ट लाइक अ वेब सीरीज एंड मूवी. तो जल्दी मिलते हैं आई होप कि अगले एपिसोड में. आई लव यू सो मच. गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.